starting with the account subject and part 1 chapter number 3 we are taking first valuation of goodwill. Goodwill, you are familiar with this word goodwill. We have seen the meaning of this word goodwill in 11th standard also. So goodwill is an intangible asset which shows the value of reputation of business in the market. Okay, it is the value of reputation. आपका जो बिजनेस है उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है एंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट रेपुटेशन इज नोन एज गुडविल. ओके, ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ठीक है, आपके प्रॉफिट के ऊपर भी आपको जो प्रॉफिट होगा दैट इज योर गुडविल. जब आप मार्केट में इफ़ यू वांट्स टू सेल ऑफ योर बिजनेस देन द प्राइस विच इज़ ओवर एंड अबाउ द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, सो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा आपकी गुडविल. ठीक है, सो इट इज़ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस और वी कैन से इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस. नाउ गुडविल इज एज वी हैव सीन इन 11th standard also, it is an intangible asset. Intangible means which cannot be seen, which cannot be touched, that is intangible, जिसे आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, but it has some monetary value, so it is known as intangible asset. So goodwill is an intangible asset and we record it in the balance sheet under the head non-current asset, and under non-current asset it is further classified as intangible asset. So it is a non-current asset and intangible asset. Now in case of sole proprietor, in 11th we have studied about the sole proprietorship only, but in 12th you will study about the partnership. So in case of sole proprietor you will calculate your goodwill only at the time of the sale of your business. जब आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हो only at that time you have to calculate your goodwill. But in case of partnership there are many circumstances in which you have to calculate your goodwill, and those circumstances are when you admit any new partner in your business. ठीक है, जब आप किसी नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एंटर करते हो. देन इफ देर इज डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी की डेथ हो जाती है एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू रीवैल्यू योर गुडविल and assets also and liabilities also. Then another reason is change in profit sharing ratio among existing partners. आपका जो existing profit sharing ratio है, if you want to change that then at those circumstances also you have to revalue your goodwill. Then another reason is retirement. If any partner retires then at that time also you have to calculate your goodwill, because you have to pay some amount of goodwill to that partners for providing his service. Another reason is conversion of partnership firm into company. If you are expanding your business, you are converting your partnership firm into a company, at that time also you have to calculate your goodwill. And last one is amalgamation of partnership firm. If you are amalgamation means when two firms merge and it and forms a new firm, then it is called as amalgamation. So if you have the purpose of amalgamation of your firm, then in those circumstances also you have to revalue your goodwill. Now किस situation में means which are the factors which are the factors which affect the value of goodwill. ठीक है, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपकी गुडविल को. सो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस, द नेचर ऑफ योर बिजनेस. ठीक है, किस बिजनेस में आप डील कर रहे हो, किस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो. ठीक है, इफ़ यू आर इन अ मोनोपोली देन ऑफ कोर्स योर गुडविल विल बी हायर. सेकेंड इज लोकेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है, जिस लोकेशन पे आप हो, अगर आपके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं या फिर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेज और दैट सिचुएशन ऑल्सो योर वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हायर. देन नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ बिजनेस. ओके, ओल्डर द फर्म हायर द रेपुटेशन. आपकी बिजनेस जितना पुराना होगा, जितने सालों से चल रहा होगा, उतनी ही आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल भी हायर होगी.
Then next is market situation. As we have discussed, if you have limited competitors, then naturally your value of goodwill will be higher. Then efficiency of management. If you have honest employees or efficient employees, or your management is efficient, then your value of goodwill will be also higher. So these are the factors which affect value of your goodwill. There are certain methods which help you to calculate the value of your goodwill. Okay, in different circumstances we'll use different method. So one by one we will discuss each method and we'll take the example from each method. So your first method is simple average method. Now in simple average method, we assume that in nearby future there may not be any major changes in the profit. Means हम ये अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो प्रॉफिट है वो सेम रहेगा या मोर और लेस सेम रहेगा, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं होगा. ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगा, ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो जाएगा या लॉस नहीं हो जाएगा. सो इन ए सिंपल एवरेज मेथड वी अज्यूम दैट our profit will remain more or less same. Now what are the steps of calculating goodwill under simple average method? So first formula is, first of all you have to calculate average profit. number of years दिए हुए होंगे आपको, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ होगा. so you have to calculate average profit from that information, and the formula is total profit of given years divided by number of years. Means you have to sum of the profit given to you and divide that sum by the number of years. जितने number of years आपको दिए होंगे उससे divide करना है. Then this average profit will be multiplied by number of years of purchase. जो goodwill आपकी है उसका number of years of purchase आपको multiply करना है with average profit. So you will get your goodwill. Now we are taking illustration number 1. Illustration number 1. Determine the value of goodwill based on 3 years purchase of last 5 years average profit. Now underline this 3 years purchase. जब हमें multiply करना है तब हम ये लेंगे 3 years, not this one. Okay, this is the information which is given to you for the 5 years and this is 3 years of purchase. This we will multiply with the average profit. From the following information of a partnership firm of Nilesh and Nikunj, last 5 years profit information is as under. Now the information regarding year and profit is given to you: 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15 and 15-16. 2 lakhs, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000 and 2,20,000. Now we'll calculate our example. You have to prepare a small table, years and profit. 2011 जो एज इट इज टेबल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, सेम वी हैव रिटन ओवर हियर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. सो वी विल टोटल मेक टोटल ऑफ दिस प्रॉफिट. ओके, सो द टोटल इज 10,35,000. नाउ विल पुट दिस फर्स्ट फॉर्मूला. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो 5 years की इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था. सो अवर फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो टोटल प्रॉफिट एज वी हैव फाइंड आउट 10,35,000 divided by number of years. 5 years are given to you, so is equal to your average profit is 2,07,000. And this is not your final answer, you have to calculate goodwill also. So goodwill is equal to average profit multiplied by number of years of purchase. So number of years of purchase जो हमने अंडरलाइन किया था 3 years, और average profit जो हमने अभी फाइंड आउट किया 2,07,000. So is equal to your goodwill amount is rupees 6,21,000. So this is simple average method.